In 10th class, hopefully you will be fit fast, enjoying good health. तो जी 10th क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 10। आज हम सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स like higher animal, that is Homo sapien, like you. The task of gas exchange in your body is supported by which kind of system? That is respiratory system. And how you can define this one? There's a network of organs and organ system which help you in respiration or breathing process. That's most complicated, so have been divided into two major parts. First one is air passageway and the second is lung. Firstly, we talk about air passageway. Actually, these are the parts through which outside air come into the lungs and the impure air is expelled out into the environment. This is the major reservoir by which we can obtain or receive or get outside fresh air into the lungs, and for oxygenation there's a mixing of blood into body. And next one is that if after oxygenation there is a surplus of carbon dioxide, there is a poisonable gas which can change your blood pH. So as soon possible we want to expel out it. And what kind of passage support you for this task? That is the air passageway, which we will discuss in detail in this chapter. Second is lungs. Lungs are very complicated, spongy organ which are well elastic and that provide to you great supply of your body with oxygen for the cellular respiration and for blood for the oxygenation. Next, this was just introduction of respiratory system. Now we come to talk about details of air passageway. If we talk about air passageway, the first component of this system, that is nose. How you can define nose? This is a major one, projecting pointed part of your body on your face that help you in trapping fresh air into lungs or nasal cavity. Second component of the air passageway is nasal cavity. That is a thin membrane like structure enclose your nose. Next one is pharynx, which is a tube muscular passage which responsible for passage of both air and food. Then the fifth part, which is larynx or voice box. After larynx we have trachea, that is windpipe. Then we want to talk about bronchi. Then we will discuss about bronchiole, and then alveolar duct, and the finally alveoli, which are the unit of lung. Millions of alveoli constitute your lung. This is the basic unit of structural and functional unit of your lung. डायग्रामेटिकली हम इन पार्ट्स को देखते हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये। तो जी क्लास, ये मैंने कहा प्रोजेक्टिंग पार्ट है आपका बॉडी का। अपर पार्ट में ये नोज मौजूद है आपका, अबव ऑफ माउथ, दैट इज माउथ। नोज विच हेल्प यू in smell and respiration. Then nose is enclosed by a thin membrane structure. This one is called nasal cavity. This floor is called nasal cavity.
which is further composed of epithelial granular cells which produce mucus, which used to warm up or moisten the upcoming air to make the temperature of upcoming air equal to the body. And then after nasal cavity, which further lead into a muscular passage which is called pharynx. At the floor of pharynx there is a narrow opening. At the floor of pharynx there is a narrow opening which is made up of cartilage, is called glottis, and epiglottis is guarded by a flap glottis is guarded by a flap of tissue which is called epiglottis. This one is epiglottis. Sorry. Then this one is called larynx, which is voice box, because it contains two fibrous band called vocal cord which used to vibrate for producing sounds. Next one is a long tube which is the continuation of larynx called trachea, which is also known as windpipe, because it is just like a hollow tubular structure made up of cartilage. On entering into chest cavity, trachea used to divide into two smaller tubes known as bronchi, and bronchi further progressively divide into fine tubules called bronchiole, which end to alveolar duct, which end into a pouch-like or sac-like structure which is lined by a single epithelial layer. This one is called alveoli. Singly you can say that alveolus. तो जी क्लास, ये हमारे पास लंग है. हम देख रहे हैं कि हमारा राइट लंग थोड़ा सा लेफ़्ट लंग के मुकाबले में क्या है जी, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके 3 लूप्स होते हैं. इस तरीके से इसके 3 लूप्स होते हैं और इसमें कितने लूप्स होते हैं? 2 लूप्स होते हैं. इन 2 लंग्स के दरमियान यहाँ पे जो लोकेटेड है, आपने 9th में पढ़ा था, वो आपका हार्ट होता है जो 2 लंग्स के दरमियान मौजूद होता है. तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं डिस्कस कर रहे, इसलिए हमारा मेजर जो टास्क है वो लंग और एयर पैसेजवे है. होपफुली आपने विजिबली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि किन पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. एयर सबसे पहले नोज में एंटर होती है, नोज से वो आती है नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलाई में आ जाती है. यहाँ पे उसका एक्सचेंज हो जाता है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी, तो वो हमारे पास क्या होगा? एल्वियोलाई. यही मेजर साइट है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. और बाद दफ़ा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेस द पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम द नेज़ल कैविटी टुवर्ड एल्वियोलाई. तो उस क्वेश्चन में आपने, उस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने यही डायग्राम नीट एंड क्लीन बना के अच्छे तरीके से लेबल करनी है. अंडरस्टैंड क्लास? तो जी हम अब थोड़ा सा, ये तो थी एनाटॉमी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी पे फोकस करते हैं. तो जैसे हमने कहा कि नोज़ हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है एयर पैसेजवे का, तो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है. दिस इज़ द पार्ट प्रोजेक्टिंग अबव द माउथ ऑन फेस ऑफ ह्यूमन बॉडी. लाइक देखें कि ये फेस है ह्यूमन बॉडी का और ये माउथ है, इससे अबव ये प्रोजेक्टिंग पार्ट है, इससे कहा जाता है नोज़ कहा जाता है. और इसमें फर्दर क्या मौजूद होते हैं? नॉस्ट्रल्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में और स्मेलिंग प्रोसेस के अंदर. नेक्स्ट है नोज़ के बाद नेज़ल कैविटी. सेकंड जो हमारा एयर पैसेजवे है वो है हमारे पास नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी क्या है जी? ब्लू. नेज़ल कैविटी हमारे पास थिन मेम्ब्रेन दस हेल्प आर इनक्लोज नोज इज कॉल्ड नेज़ल कैविटी.
which is furtherly made up of hairs, a hair-like structure known as cilia, and epithelial granular cells which are used to produce mucus. तो hair-like structure help in filtration of air by removing any kind of dust or insect, and mucus help the air by warming it or by lubricating it. अपकमिंग एयर जो होती है उसका टेम्परेचर एक तो ना हमारी बॉडी के इक्वल होता है, सेकेंड ये कि वो ड्राई हो सकती है, तो उसे थोड़ा सा मॉइस्चन किया जाता है जिसके ज़रिए म्यूकस के ज़रिए जो कि इसका नॉस्ट्रल की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, जो कि कॉलमर सिलिएटेड सेल से कंपोज्ड है, वो प्रोड्यूस करती है म्यूकस को। नेक्स्ट है हमारे पास फेरिंक्स, थर्ड कंपोनेंट है फेरिंक्स, जो कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन पाथवे है, फूड भी गुजरता है इसमें से, एयर भी गुजरता है, तब हमने फूड के लिए डिस्कस किया था, आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं फॉर एयर। एक्चुअली ये है कि जी दिस वन इज़ अ हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर और ट्यूब इनसाइड द नेक विच इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। आगे जाके एयर जो है वो लैरिंक्स में प्रोसीड करेगा और फूड जो होगा वो इसोफिकस में चला जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास लैरिंक्स। लैरिंक्स का सेकंड नाम है वॉइस बॉक्स। हाउ यू कैन डिफाइन लैरिंक्स? एक्चुअली दिस इज अ ट्यूब लाइक बॉक्स। What is larynx? This one is a tube-like box which is made up of cartilage and that contain vocal cord which help in sound production. Why larynx called voice box? Because two pair of fibrous bands are attached to larynx. When air passes through these fibrous bands, they used to vibrate and vibration makes sounds. नेक्स्ट इज ट्रैकिया। वो ट्रैकिया सेकेंड नाम है ट्रैकिया का विंड पाइप, क्योंकि ये टोटली इंटरनली क्या है, ये हॉलो सी ट्यूब है। विंड पाइप लॉन्ग ट्यूब विच इज़ अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ लैरिंक्स। ये एक लॉन्ग ट्यूब है, कॉन्टिन्यूशन है किस चीज़ की? लैरिंक्स की, जो कि कंपोज्ड होती है कार्टिलिजीनियस रिंग से और जिनकी शेप होती है सी शेप। रफली मतलब अगर आप ये बात करें ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया ये जो एक अंदर से एक एम्प्टी ट्यूब है, इसमें इस तरीके से रफली सी शेप कार्टिलिजिनियस रिंग्स मौजूद होती हैं और इस ट्रैकिया की जो लेंथ होती है अडल्ट के अंदर वो 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। ऑन एंटरिंग into chest cavity, trachea used to divide into smaller tubes called bronchi, right and left. तो ह्यूमन बॉडी में वन पेयर ऑफ ब्रोंकाई मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई कॉन्टिन्यूसली टू डिवाइड इनटू फाइन ट्यूब्स विच इज़ कॉल्ड ब्रोंक्यूल। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि ब्रोंकाई में कार्टिलिजिनियस प्लेट मौजूद होती हैं, बट ब्रोंक्यूल के अंदर कार्टिलिजिनियस प्लेट्स प्रोग्रेसिवली लूज हो जाती हैं। तो जी क्लास ये तो आज हमने देखा एयर पैसेजवे। आगे जाके ये जो आपका ब्रोंकाई है ये जाके आगे एलुलर डक्ट में एंड होता है, जो कि आगे एंड होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप एल्व्यूलाई कहते हैं, जो कि यूनिट है किस चीज़ का? लंग का। और एक मेजर ब्लड वेसल जो है रैप करती है एल्व्यूलाई को, जिसे हम क्या कहेंगे? कैपिलरीज, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट जी क्लास, तो जी आज हमने डिस्कस किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि ये आपका नेटवर्क है डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का, जो कि हेल्प करता है आपकी बॉडी को रेस्पिरेशन प्रोसेस में। उसके बाद हमने इसके मेजर 2 पार्ट्स डिस्कस किए, जिसमें एयर पैसेजवे था और लंग्स थे, और एयर पैसेजवे में फर्दर 9 कंपोनेंट मौजूद थे और हमने इन डिटेल उन 9 कंपोनेंट को डिस्कस भी किया। होपफुली आपने बेटर लर्न किया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।